Oh, और एक बार वहां गए नहीं थे रात की योजना ब्लू हो जाएगा तब बोल लैपटॉप में ठीक हो गया तो बात अच्छी नहीं होगी Yes, sure. A very warm welcome to all present here on this special occasion where we have gathered to celebrate the International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking as a part of our nationwide campaign Nasha Mukht Bharat Abhiyan. It is my honor and privilege to stand before you today and extend my heartfelt greetings to all those who took out the time to join us, especially the principal secretaries from various states and UTs, district magistrates, superintendents of police, master volunteers from across the country, students and faculty of universities, representatives and members from spiritual organizations, NCC cadets, NSS and NYKS volunteers, civil society organizations, and all other stakeholders. On this occasion, I would like to extend my warmest welcome to Sri Ajay Kumar Bhalla, Home Secretary, Sri Saurabh Garg, Secretary, Ministry of Social Justice and Empowerment, and Sri Satyanarayan Pradhan, Director General NCB, for gracing this event with their presence. This presence of unified strength here and such engagements foster interdepartmental ties, and I hope our viewers from across the country would build on the discussions that will ensue today and contribute in creating a drug-sensitized society. It is an honor to have with us today Sri Ajay Kumar Bhalla, Home Secretary, who has very kindly consented to grace the event with his presence. Sir, we are very thankful to your unwavering support,
constant guidance, and always taking out your time from your busy schedule for the Abhiyan. Your emphasis on a convergent approach has given the Abhiyan an effective platform for enabling conversations and a joint effort to take on substance abuse. I request you to address the gathering, sir. Very good afternoon to all of you. My colleague Saurabh here, my ministry colleagues, DG NCB, DGs of Border Guarding Forces, and all the officers who are online. You are all aware that 26 June is observed as International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking. This day is observed across the world to raise public awareness against the menace of drug abuse. Various organizations of Government of India, various organizations under the states, along with NGOs, organize various awareness programs to create awareness among the public, especially among students, youths, about evils of drug abuse. The Ministry of Social Justice and Empowerment is the lead ministry in Government of India to deal with this subject of drug demand reduction. In this endeavor, they are supported by MHA through Narcotics Control Bureau, through Department of Revenue and Ministry of Health and Family Welfare also, among other stakeholders. The Nasha Mukta Bharat Abhiyan launched by them on 15th August 2020, which was launched by Honorable Prime Minister, is spearheaded by this ministry. And it's a big success among various sections of the society, especially the youth. I'm glad to know that now this Abhiyan is being undertaken in 372 sensitive districts, which are covered under this ambit of this Nasha Mukta Abhiyan. Today we are commencing another chapter of this highly successful Abhiyan in the form of Nasha Mukt Bharat Border Areas Program, which will focus on intervention in border areas with the participation of various border guarding forces. Various activities under the program has been planned to ensure that people staying in border areas are safe from the menace of drugs, and simultaneously the medical facilities of border guarding forces are also utilized for their benefits. I am told that today's event is being attended by more than 1,500 officers, ranging from principal secretaries of various states, district collectors, superintendents of police, and senior officers of central government and state government and border guarding forces. A convergent approach which combines the efforts of all these stakeholders is the need of the hour to effectively take on the menace of drugs abuse. I am happy to learn that in this sequence, Narcotics Control Bureau, being the premier drug law enforcement agency in India, through its field units, observed Nasha Mukt Bharat Pakhwada during the last 2 weeks across the country. During this Pakhwada, anti-drugs awareness messages were disseminated widely among the citizens of India through various physical and digital activities. Simultaneously, Ministry of Social Justice and Empowerment has also conducted awareness programs across the country. Recently, our Honorable Home Minister had directed to focus our attention and efforts on running awareness campaigns against drugs in the primary and secondary schools, besides other educational institutions. In this regard, I appreciate the initiation of anti-drug awareness campaign at the grassroots level by Narcotics Control Bureau through the concerned education departments and educational institutions. On this International Day Against Drug Abuse, we all will take a vow that in the days to come, we will become active participants and partners in the campaign against this very serious issue of drug abuse and take our nation forward as a healthy and prosperous nation. This pledge should be actually taken every day. Say no to drugs and yes to life. Already it's being published all over, but I think if every day we remember this, it will be a very good thing for us, all of us, to remind our youngsters to not to fall prey to this menace. In conclusion, I would like to express my gratitude to all present here and also all those who have joined us online, and congratulate Ministry of Social Justice and Empowerment for organizing this event, which has brought together representatives from various fields of experience
and expertise on one platform. Drug abuse is a multi-dimensional issue which requires efforts of different ministries, departments, agencies of both central and state governments in a holistic manner to achieve the vision of Nasha Mukt Bharat of our Honorable Prime Minister. Let's join hands and reiterate our commitment for this noble cause. Thank you very much once again and best wishes. Thank you. Thank you, sir, for your words of encouragement. We look forward to fostering further synergy in our ongoing collaboration to propel Nasha Mukt Bharat Abhiyan to greater heights. The Honorable Union Home Minister has always emphasized on zero tolerance policy towards drugs and the need to go to the root cause of the problem to find a holistic solution. Honorable HM takes time to regularly review the progress of the NCOD initiatives. The Honorable Home Minister has sent a message to encourage all those who are working for the cause and seek their active involvement in rooting out the drug menace. Let us hear the Honorable Home Minister. छब्बीस जून को नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर मैं ड्रग के विरुद्ध लड़ाई लड़ रही हमारी सभी एजेंसियों को मन से बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। यह अत्यंत हर्ष की बात है कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो इस बार भी अखिल भारतीय स्तर पर नशा मुक्त पखवाड़ा का आयोजन कर रहा है। प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के मार्गदर्शन में गृह मंत्रालय ने नारकोटिक्स के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है। आज उसके सफल परिणाम दिखने लगे हैं। इस नीति का मुख्य स्तंभ है मोदी सरकार की होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच, जिसमें अलग अलग विभागों के समन्वय से नीति और प्रभावी बनती है। हमारा संकल्प है कि हम भारत में नारकोटिक्स का व्यापार नहीं होने देंगे और न ही भारत के माध्यम से ड्रग को विश्व के किसी और देश में जाने देंगे। ड्रग के खिलाफ इस मुहिम में देश की प्रमुख एजेंसियां, विशेषकर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, निरंतर अपनी जंग जारी रखे हुए हैं। इस अभियान को सशक्त करने के लिए गृह मंत्रालय ने 2019 में एनकोड की स्थापना की एवं हर राज्य के पुलिस विभाग में एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स का गठन किया गया, जिसका पहला राष्ट्रीय सम्मेलन अप्रैल 2023 में हुआ। ड्रग के दुरुपयोग के खिलाफ राष्ट्रीय स्तर पर उपयुक्त मंच के माध्यम से युद्ध स्तर पर अभियान चलाया जा रहा है। ड्रग के विरुद्ध हमारी इस व्यापक और समन्वित लड़ाई का ही असर है कि जहां 2006 से 13 में मात्र 768 करोड़ रुपए की ड्रग्स बरामद हुई थी, तो वहीं 2014 से 22 में लगभग 30 गुना बढ़कर 22,000 करोड़ की नशीली पदार्थ जब्त किया गया है और नशे के व्यापार करने वाले लोगों के विरुद्ध पहले की तुलना में 181% अधिक मामले दर्ज किए गए हैं। यह मोदी सरकार की नशा मुक्त भारत के प्रति कटिबद्धता को दर्शाता है। साथ ही जून 22 में हमने जब्त किए ड्रग के दोबारा उपयोग को रोकने के लिए विनिष्टीकरण अभियान चलाया, जिसमें अब तक देश भर में लगभग 6 लाख किलो जब्त मादक पदार्थों को नष्ट किया जा चुका है। चाहे ड्रग की खेती को नष्ट करना हो या जन जागरण अभियान चलाना हो, गृह मंत्रालय सभी संस्थाओं और प्रदेशों के समन्वय से ड्रग मुक्त भारत के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है। लेकिन इस लड़ाई को बिना जन भागीदारी के नहीं जीता जा सकता। आज इस अवसर पर मैं सभी देशवासियों को अपील करना चाहता हूं कि अपने आप को और परिवार को ड्रग से दूर रखें। ड्रग न केवल युवा पीढ़ी और समाज को खोखला बनाता है, बल्कि इसकी तस्करी से अर्जित धन देश की सुरक्षा के खिलाफ प्रयोग किया जाता है। इसके दुरुपयोग के विरुद्ध इस युद्ध में बढ़ चढ़कर आप लोग हिस्सा लें।
अपने आसपास हो रहे ड्रग के व्यापार की जानकारी सुरक्षा एजेंसियों को दे। मुझे विश्वास है कि हमारे सामूहिक प्रयास से हम सब नशे की समस्या को जड़ से मिटाने में सफल होंगे और ड्रग मुक्त भारत का हमारा लक्ष्य हासिल करेंगे। मैं मोदी सरकार के ड्रग मुक्त भारत के संकल्प को सिद्ध करने में अपना योगदान देने वाली एनसीबी और अन्य संस्थाओं को पुनः बधाई देता हूं और आशा करता हूं कि जब तक हम इस लड़ाई को नहीं जीत लेते तब तक हम आराम से नहीं बैठेंगे। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और धन्यवाद। अपने अच्छे स्वास्थ्य के लिए से नो टू ड्रग्स, अपने संतुलित जीवन के लिए से नो टू ड्रग्स, अपने जीवन में सफलता के लिए से नो टू ड्रग्स, अपने मन की शांति के लिए से नो टू ड्रग्स, अपने परिवार के सुख के लिए से नो टू ड्रग्स, अपने राष्ट्र की सुरक्षा के लिए से नो टू ड्रग्स। The vision and dedication of the Honorable Minister for Social Justice and Empowerment has been instrumental in driving the Nasha Mukt Bharat Abhiyan forward. His connect to the ground and community has helped the ministry develop the contours of the Abhiyan and has helped it become a Jan Andolan. The Honorable Minister sends his message from the field, which would surely further motivate the stakeholders to join the movement and create a drug-sensitized Bharat. Let us hear from the Honorable Minister for Social Justice and Empowerment. आज अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्त अभियान के कार्यक्रम के अवसर पर मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि हमारे आज के इस कार्यक्रम में देश के हमारे ऊर्जावान गृहमंत्री आदरणीय अमित शाह जी भी हमारे सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय के संयुक्त तत्वाधान में भारत में नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत जहां गृह मंत्रालय के द्वारा नशे के कारोबार में लिप्त कारोबारियों के विरुद्ध न केवल सख्ती के साथ में कदम उठाए जा रहे हैं, बल्कि जब्त नशा सामग्री को उसको संग्रह के रूप में नहीं रखा जा रहा है, बल्कि उसको भट्टियों में नष्ट करके पूरी तरह से समाप्त किया जा रहा है। और पिछले दिनों गृह मंत्रालय के द्वारा नारकोटिक्स के द्वारा जिस शक्ति के साथ में कदम उठाए गए हैं, उसके परिणाम आज समाज में देखने को भी आ रहे हैं। मुझे आज बड़ी प्रसन्नता है कि हमारे इस अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्त दिवस के कार्यक्रम में हमारे राज्यों के सभी जिला हमारे पुलिस अधीक्षक, जिले के अधिकारी, राज्यों के प्रमुख सचिव इसमें जुड़े हुए हैं और ये हम सबकी सामूहिक जिम्मेवारी है। अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्त दिवस के अवसर पर हम अपने देश से, भारत से पूरी तरह से नशे को समाप्त करने के लिए जो नशा मुक्त भारत अभियान है, इस अभियान के साथ में कदम से कदम मिलाकर हम इसको और अधिक गति देने के प्रेरणा के साथ में आगे आए। 15 अगस्त 2020 को देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा नशा मुक्त भारत अभियान का आह्वान किया गया था, जिसका उद्देश्य युवाओं, महिलाओं और हमारे छात्रों और हमारे नागरिकों की समुदाय में एक ऐसी सेना तैयार करना जो आत्मनिर्भरता के साथ में स्वप्रेरणा से समाज से इस बड़ी बुराई को समाप्त करने के लिए न केवल तरह तरह की गतिविधियां, नुक्कड़ नाटक, संगीत, बाल पेंटिंग, साइकिल रैली और पिछले दिनों जिस तरह से समाज ने अपनी सहभागिता इस कार्यक्रम के साथ में जुड़ी और देश भर में एक जागृति जो देखने में आई, कई विश्वविद्यालयों में, कई कॉलेजों में और हमारे एनजीओ सामाजिक संस्थाओं के द्वारा जिस तरह से इसमें कदम उठाए गए,
उसके परिणाम स्वरूप देश में 3 करोड़ से अधिक युवा, 2 करोड़ से अधिक हमारी मातृशक्ति और 3 लाख से अधिक शैक्षणिक संस्थाओं ने सक्रियता से इसमें योगदान दिया और लगभग 9 करोड़ से अधिक लोग आज नशा मुक्त भारत अभियान का हिस्सा बन चुके हैं। आपको ये बताते हुए मुझे प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है कि अब पहले हमने 272 जिलों को इसमें नशा मुक्त भारत अभियान का लक्ष्य लेकर हमने इस काम को प्रारंभ किया था। अभी हमने 100 जिलों को इसमें और जोड़ दिया है। इस तरह से अब हम 372 जिलों में नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत अपनी गतिविधियों को समाज के साथ में, राज्यों के साथ में और एनजीओ सामाजिक संस्थाओं के साथ में मिलकर उसको हम बढ़ा रहे हैं। हमारा लक्ष्य है कि पूरे देश से इस नशे रूपी जहर को भगाने का है। हर जिला जब तक नशे से मुक्त नहीं हो जाता है तब तक ना तो हम चैन से बैठेंगे, ना ही हमारी सरकार चैन से बैठेगी। यह क्रांति तब तक समाप्त नहीं होना चाहिए जब तक कि ये बुराई जब तक हमारे समाज से पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाती है। और एक ऐसी आग पैदा करना चाहिए जो लोगों के लिए मार्ग प्रशस्त करे, जो मादक द्रव्यों के सेवन के विचारों से प्रभावित हैं और इस तरह से मादक द्रव्यों के सेवन में संपर्क में आने के कारण सामाजिक ताने बाने में एक बड़ा बिखराव देखने में आ रहा है। जो लोग इस नशा रूपी बुराई के शिकार हो जाते हैं, उनके घरों की स्थितियों को हम अपने आसपास के वातावरण को देखते हैं कि कई बार नशे से युक्त व्यक्ति जब घर में पहुंचता है, दिन भर का परिश्रम करके जो पैसा कमा के वो लाता है, वो पैसा परिवार के विकास में, बच्चों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, माँ बाप की सेवा के लिए खर्च होना चाहिए, उसको नशा में खर्च करके आता है और जब वापिस घर पर लौट कर आता है तो परिवार में एक कलह का वातावरण पैदा होता है। बच्चों के ऊपर भी मानसिक रूप से बहुत विपरीत प्रभाव पड़ता है, पड़ोस में रहने वाले लोगों को भी, और उससे एक बेचैनी होती है। इसी कारण से इस नशा मुक्त भारत अभियान का जो प्रमुख उद्देश्य है कि इस अभियान के अंतर्गत हम सब एक पथ प्रदर्शक के रूप में एक जागरूक सिपाही बने, एक जागरूक नागरिक बने, एक जागरूक बच्चे बने और हमारे अंदर एक ऐसी सहानुभूति, साहस और सभी को साथ में लेकर चलने का व्यवहार विकसित करना चाहिए। हम सभी नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत एक सुख शांतिपूर्ण देश की हम कल्पना करते हैं, जहां सभी को इलाज की सुविधा हो, पुनर्वास की सुविधा हो और बिना किसी भेदभाव के, कलंक के सभी को बेहतरी के लिए एक समावेशी वातावरण बनाने की दिशा में हम आगे बढ़ें। इसके लिए मंत्रालय के द्वारा देश भर में 500 से ज्यादा ऐसी स्वयंसेवी संस्थाओं और एनजीओ के माध्यम से, जहां पर इस तरह से नशे से युक्त लोगों के लिए उनके उपचार की और उनके पुनर्वास के लिए सेवाएं दी जा रही हैं। इसके साथ ही साथ मेरा मानना है कि इस सामाजिक समस्या को कई बार लोग बात कहते हैं कि ये समस्या बहुत विकराल हो गई है, बहुत बढ़ गई है और इसको समाप्त नहीं किया जा सकता। लेकिन मेरा मानना है कि समाज अगर दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ में, इस संकल्प शक्ति के साथ में अगर तय कर ले कि हम सभी को मिलकर और इस नशे को पूरी तरह से समाज से, उद्देश्य से इस बुराई को खत्म करना है, और ये किसी एक व्यक्ति के द्वारा नहीं, केवल एक परिवार के द्वारा नहीं, केवल एक प्रदेश के द्वारा नहीं, बल्कि पूरे समाज ने, पूरे देश ने मिलकर इस दिशा में दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ में कदम आगे बढ़ाना पड़ेगा। और जब हम दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ में इस दिशा में कदम आगे बढ़ाते हैं तो हमने देखा कि पूर्व में जो हमारे देश में सती प्रथा, बाल विवाह प्रथा जैसी कुरीतियां थी, और जब देश ने तय किया कि हमें अपने देश से सती प्रथा को समाप्त करना है, बाल विवाह जैसी कुरीतियों को समाप्त करना है, और जब ये सारा समाज उठ के खड़ा हुआ तो हमने सती प्रथा को भी समाप्त किया, देश ने बाल विवाह प्रथा को भी खत्म किया। जब हम ये बुराइयां खत्म कर सकते हैं तो हम नशे रूपी बुराई को भी समाज से खत्म कर सकते हैं, देश से खत्म कर सकते हैं। हमने इस अभियान के माध्यम से, और पिछले दिनों 12 अगस्त 2022 को केंद्रीय विद्यालय आर.के. पुरम में देश भर के हमारे कॉलेजों के, विश्वविद्यालयों के, स्कूलों के छात्रों का एक साथ नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत उनका सामूहिक रूप से शपथ का एक कार्यक्रम का आयोजन किया। और ये मुझे बताते हुए बड़ी प्रसन्नता हो रही है, इस आयोजन में देश भर के लगभग 1,66,00,000 से ज्यादा विद्यार्थी इसमें शामिल हुए और 98,543
शैक्षणिक संस्थाओं ने इसमें अपनी सहभागिता ली और ये इस बात को बताता है कि हमारे देश की युवा शक्ति भी इसमें आज बड़ी तेजी के साथ में जागृत होकर आगे आ रही है। जब हमारे देश का युवा बुराई की तरफ जागृत होकर आगे आता है, मैंने देखा कि अनेक विश्वविद्यालयों में नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत वहाँ पर तरह तरह की पेंटिंग प्रतियोगिताएं की गई, उसमें रैलियां की गई, उसमें भाषण प्रतियोगिताएं भी की गई, मिनी मैराथन दौड़ का भी आयोजन किया गया। संगीत के माध्यम से भी ये जो क्रांति युवाओं के माध्यम से जागरूकता के साथ में आगे आ रही है, ये इस अभियान का एक बहुत बड़ा हिस्सा बनने जा रही है, बहुत बड़ी ताकत बनने जा रही है। हमें अपने देश के इन युवाओं के साथ हमारे देश की जो मातृशक्ति है, क्योंकि हमारी मातृशक्ति का केवल परिवार में नहीं बल्कि समाज के निर्माण में, वो देश के विकास में मातृशक्ति का बहुत बड़ा योगदान होता है। मातृशक्ति अगर तय करती है कि हमारे परिवार में हमारा बच्चा कहीं किसी तरह से दुष्प्रभाव का शिकार तो नहीं हो रहा है, मादक द्रव्यों के सेवन में तो नहीं आ रहा है, और सबसे पहले माँ का ध्यान जाता है। परिवार में अगर मातृशक्ति जागरूक होती है तो परिवार के साथ समाज और देश से भी उस बुराई को खत्म करने के लिए इसका बहुत अच्छे ढंग से उपयोग किया जा सकता है। मैंने कई स्थानों पर यह देखा कि कुछ बच्चे जब गलत संगत के कारण, अपने मित्रों के कारण नशे की आदत का शिकार हो जाते हैं। शुरू में जब वो परिवार में पैसा मांगते हैं मोटरसाइकिल में पेट्रोल के नाम पर, फिर वो हमें दूर जाना है और हमको पैसा चाहिए। माँ बाप सोचते हैं कि पहले तो कम पैसे मांगता था हमारा बच्चा, लेकिन अब ये पैसा ज्यादा मांग रहा है, क्या कारण है? वो जब गहराई से विश्लेषण करते हैं तो जानकारी मिलती है कि उनका बच्चा तो जो है वो नशे की आदत का शिकार हो गया है। उसको पैसा उसको समझाते हैं, पेरेंट्स उसको समझाते हैं, उसको पैसा देना बंद कर देते हैं, लेकिन बच्चा इस तरह की जब आदत का शिकार हो जाता है तो एकदम से बुराई खत्म नहीं होती है, बल्कि उससे जब घर से पैसे नहीं मिलते हैं तो नशे के कारोबारी लोग बच्चों को उसके लिए उनको पुड़ियां देते हैं। पुड़ियां देकर कहते हैं कि आप तुम इनको बेच कर आओ तो हम तुमको एक पुड़िया फ्री देंगे। हमको परिवार के साथ साथ हमारे समाज में इर्द गिर्द जो हमारी शैक्षणिक संस्थाएं, शैक्षणिक संस्थाओं में इस तरह के आसपास इस तरह के तत्व अगर वहां पर सक्रिय हो रहे हैं तो केवल जिन बच्चों के इस बुराई से ग्रसित हैं, केवल वो परिवार ही नहीं, समाज की सबकी सामूहिक रूप से जिम्मेवारी बनती है। शैक्षणिक परिसरों के आसपास इस तरह के नशे के कारोबारी अगर गलत तरह की गतिविधियों में लिप्त हैं तो उसको संबंधित जो पास के पुलिस थाना है, हमारे जो जिले के अधिकारी हैं, उनसे संपर्क स्थापित करके ऐसे नशे के कारोबारियों के विरुद्ध सख्ती के साथ में कदम उठाने के लिए समाज भी आ गया है और प्रशासन ने भी इस संबंध में सख्ती के साथ में कदम उठाना चाहिए। मंत्रालय के द्वारा एक नव चेतना मॉड्यूल विकसित किया गया है। इस नव चेतना मॉड्यूल के माध्यम से छात्रों के और शिक्षकों का, छात्रों का ग्रुप बनाकर लगभग जैसे 20 बच्चों के ऊपर एक शिक्षक हो, तो वो शिक्षक उन बच्चों के ऊपर निगरानी रखते हैं और बच्चों के व्यवहार में अगर किसी तरह का परिवर्तन देखने में आ रहा है तो प्रारंभ में ही इन परिवर्तनों को, लक्षणों को जानकर उस बच्चे के साथ में काउंसलिंग करना, बच्चे के साथ ही साथ उनके अभिभावकों को भी बुलाकर, यानी अभिभावक भी साथ बैठे, टीचर्स भी बैठे और वो बच्चा भी बैठे, प्रारंभ में ही लक्षणों को जानकर उसको नशे के लिए आदत से न केवल दूर करना बल्कि जीवन भर के लिए उस बुराई से उसको बाहर निकाल करके हमारे उस युवा के, हमारे उस विद्यार्थी के अंदर की जो रचनात्मकता है, उसके अंदर का जो सृजन का भाव है, उसकी जो आंतरिक इच्छा शक्ति है, उस इच्छा शक्ति के बल पर उस बुराई से एक और उसको निकालना है और इस बुराई के विरुद्ध सामाजिक वातावरण तैयार करने में उसको एक जागरूक सिपाही बनाने की दिशा में भी यह नव चेतना मॉड्यूल एक बहुत बड़े प्रभावशाली कदम के रूप में सामने आया है। और इसको 12 क्षेत्रीय भाषाओं में इसके संबंध में जो प्रशिक्षण संबंधी जानकारी है, इसको 12 क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद किया जा रहा है, जिससे कि बहुत ज्यादा व्यापकता के साथ में पूरे देश में इस नवचेतना मॉड्यूल के माध्यम से हमारे छात्रों को प्रारंभ में ही गलत दिशा में बढ़ने से रोका जा सके और समाज की, पेरेंट्स की और शिक्षकों की सामूहिक रूप से इसमें भूमिका निभाई जा सके। इस नवचेतना मॉड्यूल के माध्यम से हम 300 जिले, 30,000 विद्यालय, 10 लाख अध्यापक और लगभग 2.4 करोड़ छात्रों को इस अभियान में शामिल करने का हमने लक्ष्य रखा है। और उसमें आने वाले समय में जिस तरह से हम लक्ष्य को लेकर चल रहे हैं,
इसमें हमारी समाज की भी सहभागिता मिलने का भी हम अपेक्षा करते हैं। और ये अभियान नशा मुक्त भारत अभियान की दिशा में एक युगांतरकारी कदम साबित होगा, जिसके माध्यम से हम अपने शैक्षणिक क्षेत्र को पूरी तरह से नशा मुक्त बनाने का जो लक्ष्य लेकर चल रहे हैं, क्योंकि ये हमारा आज का बच्चा, आज का हमारा विद्यार्थी ये कल का नागरिक बनने वाला है। और इसको ये अच्छा जागरूक विद्यार्थी जब बनेगा तो कल को अच्छा नागरिक बनेगा। मैं चाहता हूं कि हमारे इस कार्यक्रम में जो हमारे सभी देश के सभी हमारे पुलिस अधीक्षक, जिलाधिकारी और राज्यों के हमारे मुख्य सचिव और सचिव सभी इसमें भागीदारी की है। आइए हम सब नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत इस संदेश को देश के सभी युवाओं, महिलाओं और जन जन तक पहुंचाना चाहेंगे, ताकि हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जो जीरो टॉलरेंस का सपना है, उस सपने को साकार करने में समाज, सरकार और प्रशासन और सामाजिक संस्थाएं सभी मिलकर हम अपने देश को नशा मुक्त अभियान बनाने के लिए, नशा मुक्त भारत बनाने के लिए कदम से कदम मिलाकर आगे चलें। मुझे पूरा विश्वास है कि निश्चित ही जब समाज नशे के जाल को आने वाले दिनों में समाज से पूरी तरह से जड़ से उखाड़कर फेंक देने की दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ में आगे आएगा, तो न केवल नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत हम अपने देश के युवाओं की एक शक्तिशाली फौज को तैयार कर सकेंगे, बल्कि आज जो अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्त दिवस है, हम अपने देश से एक जो हमारा देश विश्व गुरु कभी कहलाता था, उस दिशा में आगे बढ़ने की दिशा में देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा पिछले 9 वर्षों में जो कदम उठाए गए हैं, उन 9 वर्षों में जो युगांतरकारी कदम उठाए गए हैं, उसमें नशा मुक्त भारत अभियान भी एक मील का पत्थर साबित होने वाला है, जो भारत पूरे देश को एक मॉडल के रूप में कि हम अपने देश से नशा मुक्त भारत अभियान को पूरी तरह से सफल करके हम दुनिया को भी एक रास्ता दे सकते हैं कि ये एक वैश्विक समस्या है। ये समस्या केवल एक देश की नहीं, ये समूच की विश्व की वैश्विक समस्या है। और हम सभी मिलकर अब अपने देश को पूरी तरह से नशा मुक्त बनाते हुए भारत को जो विश्व गुरु बनाने का जो सपना है, उस सपने को साकार करने की दिशा में हम कदम से कदम मिलाकर आगे चलें, तो आने वाले समय में हमारा देश नशा मुक्त होगा। हमारा देश भी, हमारे देश का युवा भी जो है ना, वो भी आत्मनिर्भरता के साथ में, अपने कौशल के साथ में, अपनी इच्छा शक्ति के साथ में परिवार, समाज और देश के विकास में अपना योगदान दे सकेगा। धन्यवाद। Nasha Mukt Bharat Abhiyan, since its launch, has transformed into a community-driven campaign with the active involvement and vibrant participation of stakeholders like youth, women, educational institutions, spiritual organizations, and the community at large. Let us look at a short film on the Nasha Mukt Bharat Abhiyan to know more about its activities and achievements. 15 अगस्त 2020 को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा नशा मुक्त भारत अभियान का प्रादुर्भाव हुआ। इसका लक्ष्य नशे जैसी गंभीर बीमारी के प्रति लोगों को सचेत करना और नशा मुक्त समाज का निर्माण करना था। आज हम एकजुट होकर एक प्रतिज्ञा लेते हैं कि मैं अपने देश को नशा मुक्त बनाने के लिए हर संभव प्रयास करूंगा। ये अभियान जन आंदोलन बनकर वर्तमान में देश भर के 372 जिलों में अपने कदम सफलतापूर्वक बढ़ा रहा है। समाज के हर वर्ग ने, चाहे वो महिलाएं हों, युवा हों या किशोर, इस अभियान में हिस्सा लेकर अपनी दमदार उपस्थिति दर्ज कराई। आज ये अभियान एक विराट क्रांति में बदल गया है। कश्मीर से केरल और कामरूप से कच्छ तक इस अभियान के अंतर्गत जिलों और राज्यों द्वारा आयोजित जन गतिविधियों ने अभियान के संदेश को बड़े शहरों से लेकर छोटी सीमावर्ती गांवों तक फैलाने में मदद की है। आप सभी नगरवासियों से आह्वान किया जा रहा है, जीवन में किसी भी प्रकार का नशा न करें। बेहतर सामुदायिक पहुंच के लिए मंत्रालय द्वारा भी कई महत्वपूर्ण और प्रभावी कदम उठाए गए हैं।
एन कोड तंत्र के तहत दिए गए मार्गदर्शन से बड़े स्तर पर नशे के खिलाफ इस लड़ाई में अधिक समन्वय आया है और इस अभियान को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने में मदद मिली है। इस अभियान ने न केवल नशे में लिप्त लोगों को इस अंधकार से बाहर आने के लिए प्रेरित किया, बल्कि उन्हें अपनी लत छुड़ाने के लिए खुलकर मदद मांगने का साहस भी दिया। इसके अलावा नशे के चंगुल में फंसे लोगों के साथ सहानुभूति की भावना रखते हुए और उनके पुनर्वास के लिए उपचार सेवाओं का विस्तार किया गया और उन केंद्रों तक पहुंच आसान करने के लिए उन्हें जियो टैग भी किया गया है। जन भागीदारी और नशे के विरुद्ध देश के कोने कोने से इस बुराई के खिलाफ उठी आवाज का ही परिणाम है कि इस अभियान ने 3 करोड़ से अधिक युवाओं, 2 करोड़ से अधिक महिलाओं समेत 9 करोड़ 40 लाख लोगों तक अपनी पहुंच बनाकर एक नई रोशनी फैलाई है। हर साल ये अभियान सफलता की नई कहानी लिख रहा है और ये संभव हुआ है सामूहिक प्रयास से। लेकिन इस अभियान की यात्रा अभी जारी है। अभी और नई मंजिलें तय करनी है, कई और लोगों तक पहुंचना है और तब तक प्रयासों के कदम को बढ़ाते रहना है जब तक नशा मुक्त भारत के लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। से नो टू ड्रग्स। Running a mass campaign for nearly 3 years, which is still going very strong and promising to scale greater heights, is not an easy task. More so when it is by the people, for the people movement, whose tangible results are futuristic. Nasha Mukt Bharat Abhiyan would not have taken the shape of a mass movement with the principle of Jan Bhagidari if not for the various officers and stakeholders who are relentlessly working in the field. Today we will be hearing from a few of them who have played a pivotal role in leading the Abhiyan in their respective capacities. I would like to now invite Mr. Sampath Kumar, Principal Secretary, Department of Social Welfare, Meghalaya, to talk about the initiatives that have been taken in his state under NMBA and the planned way forward in this regard. So Sampath, you're not audible, Sampath. He has to switch on his mic. Sampath, I request you to please switch on your mic, increase the volume and speak. Hello, hello, ma'am. Maybe you're on two devices, Sampath. I request you to access only one device and you're audible. There is a okay. I hope you can hear me. There is a lot of distance there in the network. Sampath, you're not here. If you're on 2 devices, please log out of one. Just give us some time, and maybe you can actually move on to the other speaker. I think there is some problem here. Now you're audible. Can you try again once? If not, then we'll go to the next speaker. Is that okay, ma'am? Yes, please. Yeah. Okay. Thank you, ma'am. So, my warm greetings to all of you. In fact, this is thank you for giving me this opportunity to share the learnings of Meghalaya. In fact, let me please allow me to share a story of a mother, whom we encountered in West Khasi Hills of Meghalaya. She was running pillar to the post to help her son, who has been trapped into the drug. In fact, his journey started with a growing distance from his family, and thereafter he was dropped out of the school, and thereupon he was indulged with the tobacco consumption initially. From tobacco consumption he went to the drug addiction. This is a kind of a story that we hear in many families. This is something that we started actually looking at is how to address this problem. This problem is not only
supply side problem, but it's a more of a social problem. So using a problem driven iterative adaptation approach, the Meghalaya, we started actually understanding the systemic reasons, like how everything is. I think Sampath got disconnected. So as he reconnects, let's move on to the next district. In Rajouri district of Jammu Kashmir, 5 panchayats have been declared as Nasha Mukt, including usage of tobacco and alcohol. This was possible under the leadership of the dynamic district magistrate Rajouri, Jammu Kashmir. I would like to invite Sri Vikas Kundal Also to have talk launched about his an NMBA early journey. child an early childhood development mission, which is actually again talks about how actually if you really provide a good socio-emotional support right from the childhood, when they become adults, there is less likelihood that they get into this kind of a substance use and any other problem. So taking that, we started actually using a life cycle model where right from the conception to the entire adolescent age group, how actually the state can provide support systems, including some of the things that we are also learning from the Kerala, like student police cadets, which was actually again in fact how to engage the young people to, especially it's a very positive action. So bringing that into that kind of a systematic effort. At the same time, how actually we can really provide support to those already affected. So the state has brought a dream mission. The dream mission means essentially the drug reduction, elimination, and action mission, which is again a state is actually wanted to really take on this entire drug issue, head on, by putting all the support system right from by mobilizing all the stakeholders, right from the even including the faith leaders, how actually we need to mobilize everybody, and the schools, how actually to provide support systems in the schools, providing extracurricular, co-curricular clubs. So this is again a project that we are actually launching called Empower. Essentially, it's a Meghalaya program for adolescent well-being, employment, resilience. So idea is that with all these efforts, we hope that we are able to address the systemic reasons which are actually contributing increased substance use. We are hoping that all these efforts would actually make a difference. In fact, today our Honorable Chief Minister Shri Conrad Sangma actually has launched this dream mission in the state, essentially where the state is going to provide all-out support to both the communities to handle this issue. At the same time, those who are already affected, how actually we can provide a support to rehabilitate them. So this is the kind of a holistic measures that state is taking, and I'm glad thank you for the opportunity to share things about our Meghalaya. Thank you. Thank you very much, Sampath. We lost you for a second or two, but thank you so much for joining us, and we are glad to have you on board. And your hard work and sincerity has really put Meghalaya on the map of Nasha Mukt Bharat Abhiyan, and we look forward for many more such initiatives and interventions from your side. Thank you so much, Sampath, for joining. Now let's move on to Rajouri. Let's move on to Rajouri. In Rajouri district, 5 panchayats have been declared as Nasha Mukt, including the usage of tobacco and alcohol. I think it's a very tall achievement. And this was possible under the dynamic leadership of District Magistrate Rajouri. We have Sri Vikas Kundal with us. So Vikas, we request you to share your NMBA journey. Worthy Home Secretary, Secretary Ministry of Social Justice and Empowerment, Director General NCV, Secretary Ministry of Social Justice and Empowerment, and other distinguished guests and dignitaries. I feel privileged that I have been given this opportunity to share my experiences of running the Nasha Mukt Bharat campaign in the district. Just to set the tone, Rajouri is a frontier district. We have around 100 kilometers of LOC, which is running north to south in the district. We have around 312 panchayats, so it's a big district, and the extent of the problem was also very huge. It was very unfortunate that we were figuring in the list of the most vulnerable districts, and
As a result of this was taken as a challenge. We had a three-pronged approach. First approach was to cut the supply of the drugs to catch the people who are involved in the drug peddling business. Second was to get the sense of the problem, to get a census underway so that we actually get to know that how many people are actually getting affected, and to treat them, to give them a sense of that they are patients and that they are victims and that they are not some kind of criminals. And the third approach was to get a mass awareness program underway that no new entrants are added to the list of already to the list of people who are getting affected by this problem. If the first problem was to identify the drug peddlers, so we had a door-to-door survey by the Anganwadi workers. So we got a list of some 1,000 odd people who were willing to come out, and they were actually being affected by the problem of drug menace. So in order to treat them, we did not have any facility in the district. So we started a drug de-addiction center, and we also started an addiction treatment facility. Both these institutions are working properly in the district, and they are catering to the demands of these people who are really affected by this problem. Thereafter, the need was to create a mass awareness among the schools so that young people do not get affected by this problem. We have around 1,700 odd educational institutions. So we started with them because the vulnerable age group of 14 to 21 actually goes into these educational institutions. We had a very organized and systematic IEC campaign. We roped in socio-religious leaders. We also roped in PRI members, BDCs, DDCs, other heads of the municipal institutions. And as a result of this, we were able to create a mass movement. And it was very unique that a lot of religious institutions, while giving sermons, they actually gave lectures on Nasha Mukt Bharat Abhiyan. And as a result of this, the extent of the problem was controlled to some extent. Thereafter, in order to catch the culprits who are involved in drug peddling business, we invoked some restrictions of law like PIT NDPS and PSAs, and we were actually able to put a lot of drug peddlers behind the bar. And due to this, we were able to get the supply of the drugs. So now the challenge is that we have a lot of drug people who are already affected by drugs, and they are coming out in large numbers, but we do not have enough capacity in the drug de-addiction center where we can cater them. But somehow we are managing with the help of an NGO. And now our further focus is to create awareness so that people don't get affected further. And I think that we have been able to somehow control the problem, but there is still which needs to be done. And with the help of the ministry and all the government, UT administration will be able to control this problem. And hope that in the coming future, Rajouri will be a Nasha Mukt district. Right now, we have only 5 panchayats which can claim that they are Nasha Mukt. But in the coming months, I think all the entire district will claim to be a Nasha Mukt district. Thank you, ma'am. Thank you, Vikas. Your motivation and zeal to work for the Abhiyan has definitely made Rajouri one step closer to becoming drug sensitized under NMBA. The northeastern states, vibrant and sensitive as they are, the Nasha Mukt Bharat Abhiyan strategy has been very different. We have the District Magistrate of South Tripura, whose contagious enthusiasm has given a definite purpose to the Abhiyan in the district. I would like to now invite Sri Saju Wahid, District Magistrate, South Tripura, to share his NMBA way forward. Very good afternoon, ma'am. Thank you so much, ma'am, for giving us an opportunity to share our experience with regard to what we are doing in eastern states. Especially Tripura is one of the important states where we have a major trouble of drug users and also drug cultivation. Ganja cultivation is also very widely done in our state. So in my district, we have taken a 3-pronged approach. First of all, what we have done is regarding awareness program. So regarding awareness program, ma'am, what we did is, sir, we have started
Prahari in all our schools. And in addition to that, to create awareness program, we were having a 200 number of civil defense volunteers and Abda Mitras who are very active and energetic and young. And this students, mainly from college students and young youths, were involved in civil defense volunteers. So already trained by our BSF for managing the disaster management. So this students, the civil defense volunteers, were again trained as master trainers under Nashamukht Bharat by the master trainers, and also they have got engaged into Nashamukht Bharat Abhiyan app also as master trainers. So we are using the civil defense and Mitra volunteers for conducting the awareness program. In a quick succession, we were able to engage them in creating awareness and doing awareness programs in schools and college schools. So that is regarding the awareness programs which we are conducting. In the second stage, ma'am, regarding identification of the injectable drug users which who are there in our state. So what we used is we took the help of NGOs who are already engaged by National AIDS Control Society, who were identifying the AIDS patient, who are IDU patients who are into AIDS. So they are having a line listing of IDU users, injectable drug users and others. So this platform which we have used to identify the line listing of all the drug users of my district. So the same list has been used for the same contact tracing and also linking up to the drug peddlers and also the hotspots in the district. So the same information which we have shared with our security personnel and also the police, the same information have been used for doing bombing operations in identifying the hotspots and identifying the drug peddlers. In the third strategy, ma'am, what we are doing is to engage the kids or the youth some or other activities. So what we are planning to conduct a mega sports event so that the youth can be engaged all through the time in the afternoon and all. So we are planning that and we will be executing that in the coming days. So with this three-pronged strategy, we hope we will be able to fight this, and we are already into it, and we are able to identify the IDUs, drug users, and also the creating awareness program is in full swing. So with this, we will be able to fight this menace, but we have to accept the fact that the district and also the northeastern state are badly affected by the drug menace. Thank you for giving us an opportunity to share our experience. Thank you, ma'am. Thank you, Saju. We here understand and appreciate the efforts you all are making in the field. The District Innovation Hub set up in Tiruvallur, Tamil Nadu has helped the district design and implement innovative activities for the Nashamukht Bharat Abhiyan. I would like to now invite Dr. Alvi John Verghese, the District Magistrate, to share his experiences in taking the Abhiyan forward in Tiruvallur. Wonderful dignitaries who joined online and offline. A very warm good evening to all of you. It's a great opportunity for Tiruvallur to share our experience in this great gathering. Even though only a select districts in Tamil Nadu are involved in Nashamukht Bharat Abhiyan, the state has also understood that it is a major challenge that is being faced in the current era. And the state government has also launched a drive against drugs. It is happening for the last 1 year and it has been fairly successful in curtailing the menace. One of the major challenges as far as Tiruvallur is concerned, the peri-urban district, it's very close to Chennai, and the urban population, a lot of the urban population who are otherwise working in Chennai are residing in Tiruvallur, and it is also a border district which is bordering the state of Andhra Pradesh. So a lot of traffic of ganja and other drugs happen through the district. So we have been following a strategy of a three-pronged approach of prevention, enforcement, and rehabilitation. As far as prevention is concerned, as ma'am was telling, we were able to form a district innovation hub to design various innovative strategies for the district to fight this. So one of these things that we started was coffee with collector. And this is an initiative where the DC, the DM, interacts with students from various government schools on a bi-weekly basis, and we select schools which are otherwise
having issues related to drug abuse and entry-level threats. And this has been very useful. We were able to get feedback from the students, which are otherwise very, very difficult to get. And it has been pretty useful in getting this information, crucial information, and be able to curtail the issues at the level itself. And another initiative which we started is that senior level government officials reaching out to government schools in the various remote areas of the district. As in, we conduct programs, monthly programs like collector at school, SP at school, and other various district level officials visiting the schools and spending a day at the school and interacting with the students and visiting colleges and interacting with the students over there. We have also started something called Tiruvallur Super League and Tiruvallur Premier League. It is something on the lines of Indian Super League and Indian Premier League with football and cricket. And we are able to conduct matches, villages, and conduct matches at block level and district level later on. And this is something which is helping us to promote sports and as an alternative to other national drug and ganja abuse. And we have been very, very proactive in creating village level committees. And these village level committees are very helpful in getting information. At the same time, identifying people who are vulnerable and supporting them. School management committee is something that we were able to set up, and we are it is being very useful along with PTA. Select and interested volunteering parents have been chosen, and they counsel and guide the students. We also have a counseling center for tele-counseling center for the students to reach out whenever students, both college and school students, to reach out when they have issues relating to this thing. We have also started also a de-addiction center in the district. And along with this, enforcement is we have got the guidance of the state government. We have made it very, very stringent. We are able to put around detain 24 people and seize around 2 tons of ganja and other materials. And we have started something called occupational rehabilitation of people who are otherwise involved in hooch and other illicit liquor kind of habits. And along with the three-pronged strategy, the district is able to make steady progress in this particular vulnerable area. And we also appreciate and acknowledge the fact that we have a longer way to go, and we are surely on the right track. With the advice from the ministry and the Abhiyan, we should be able to better in this year. Thank you. You're surely on the right track, Dr. Burgess. Thank you so much for joining and sharing your experiences. Master volunteers are the heart and soul of the Nashamukht Bharat Abhiyan, acting as the torchbearers, spreading the message of the hope at the grassroots level. These are volunteers who have been working with utmost sincerity, with the commitment to the cause, and to reach out to the community in the identified hotspots without seeking any remuneration. Let's hear about the journey of the Abhiyan from Rahul Sharma, who is the master volunteer from Hisar, Haryana. आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। मैं राहुल शर्मा, मास्टर वॉलंटियर नशामुक्त भारत अभियान हिसार हरियाणा से। मैंने एक से समाज कार्य में पिछले 3 वर्ष से हम नशामुक्त भारत अभियान के साथ विभिन्न क्षेत्र में युवाओं और लोगों को जागरूक करने का कार्य कर रहे हैं। इस अभियान के तहत हम स्कूल, कॉलेज में जाकर युवाओं और बच्चों को जागरूक करें, साथ ही शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में जाकर लोगों को जागरूक करने का कार्य कर रहे हैं। इस अभियान के तहत हम 200 से अधिक का आयोजन कर लोगों को जागरूक करते हैं। और बताना चाहूंगा कि 100 से भी अधिक हम स्कूल और कॉलेज में जाकर युवाओं को जागरूक कर चुके हैं। और इस अभियान के तहत साथ साथ 50,000 युवा और बच्चों को हम नशा नहीं करने की शपथ दिलवा चुके हैं। और जो युवा नशा से ग्रस्त है, उनको हम काउंसलिंग और उपचार के माध्यम से छुड़वाने में सहयोग कर रहे हैं। इस प्रकार से हम इस अभियान को सफल बनाने में सफलता प्राप्त कर रहे हैं। आप सभी को बताना चाहूंगा कि इस अभियान को सफल बनाने में हमें माध्यम से हम नशा के दुष्परिणाम के बारे में आसानी से जागरूक कर पा रहे हैं। आपको यह भी बताना चाहूंगा कि जो आशा वर्कर है, आंगनबाड़ी वर्कर है और नर्सिंग स्टाफ है, उनके सहयोग से भी हम ग्रामीण महिलाओं को भी नशा के दुष्परिणाम के बारे में जागरूक कर पा रहे हैं। आपको एक
यह भी बताना चाहूंगा कि पिछले 3 वर्ष से हम ग्रामीण स्तर पर 9 वर्ष पर एक मेगा जागरूकता कार्यक्रम करते हैं, जिसमें की शुरुआत भी हम इस अभियान से करेंगे। पिछले 3 वर्ष से हम ग्रामीण क्षेत्र में 800 लोगों को नशा करने की शुरुआत की। आपको बताना चाहूंगा कि इस अभियान में हमें काफी जानकारी है, लोग जागरूक भी है। समय के अभाव को देखते हुए को विराम देता हूँ और आपके माध्यम से और इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं यही कहना चाहता Right, thank you, Rahul. Rahul's connection was bad, so his voice was breaking, but we still have not interrupted him because the kind of work he has done in the field, it requires that all of us appreciate him. Thank you so much, Rahul, and many such master volunteers. We have more than 7,000 plus such master volunteers working in the field for the Nasha Mukt Bharat Abhiyan. Thank you so much, Rahul, for joining. Along with conducting awareness activities on ground, it is also essential to communicate and inform the masses through the use of media. One of the elements of the communication strategy of the Abhiyan is to use radio channels. Today we launched 3 jingles that have been prepared to spread the message of the Abhiyan through radio. Nasha Mukt Bharat Abhiyan in the last 3 years has brought a sense of ownership among the people, which is reflected in this first jingle. Let's listen to jingle 1. नशा मुक्त भारत अभियान, सबका गौरव सबका मान। नशा मुक्त भारत अभियान, सबका गौरव सबका मान। जागरूकता दिल में भर दी, नशे की देखो छुट्टी कर दी। नशे का हर अभिमान है तोड़ा, करोड़ों लोगों को जोड़ा। नशे से आजादी का मतलब बेहतर जीवन जिएंगे हम। नशे से आजादी का मतलब बेहतर जीवन जिएंगे हम। सोच बदलने की आदत है, देश की अपनी ये ताकत है। सोच बदलने की आदत है, देश की अपनी ये ताकत है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, नशा मुक्त भारत अभियान। To reach out to the youth, it is important to use the language that they speak. This jingle, the second jingle, is prepared in rap style, which is expected to appeal to the youth. Let us listen to the second jingle. Yeah. Ministry of Social Justice and Empowerment. नशा मुक्त भारत अभियान, तुझे पता है ना। सुन मेरे दोस्त, तू बना रूटीन, फॉलो कर डिसिप्लिन से हद बनेगी खेल से। योगा कसरत की मेल से साइकिल चला, डंबल उठा, चल नशे को साइड हटा। खो खो कबड्डी हॉकी फुटबॉल को अपना बना, बैट घुमा और सिक्सर लगा। सिक्सर लगाने का मजा उठा, टीम बना, नशे को अपना विरोधी बनना। टीम बना, अपनी टीम बना, नशा मुक्त भारत को आगे बढ़ा। चल। Women have been leading the Abhiyan across the country. In this spirit, this third jingle evokes the contribution made by the women in Abhiyan. Request to play jingle 3. नशा तो है अभिशाह, इससे बचे रहे हम और आप यदि चाहे घर की नारी। नशे की दूर हो बीमारी, नारी में वो शक्ति है, वो कुछ भी कर सकती है। वो झलका कर अपना प्यार, नशे से मुक्त कर परिवार। नारी घर घर पहुंची है, लेकर नशा मुक्त भारत अभियान। उसके ऐसे साहस से देश को उस पे है अभिमान। नशा तो है अभिशाप। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, नशा मुक्त भारत अभियान। बस स्टैंड में थोड़ा मिठाई उठाई ले लेंगे। विक्रम साला मिठाई खाने के लिए मार रहा है साला। कैसे? और मेरा पत्रकारिता वाला डिग्री आ गया ना, बैचलर डिग्री। अब एमए का आना बच्चा है। क्या बी क्या बीए एमए अनुमति ले लेना। बीए तो हो गया ना आपका? है
अच्छा बीएच का डाल देना, अनुमति बाइक डेट में ले लेना। कहाँ से कहाँ जाएंगे? सस्ता जा रहे हैं क्या? संस्था जाएंगे, चलो देख के आते हैं। बाहर